ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का. नाउ वी आर हेयर टू स्टडी अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दिस इज द पार्ट 5th ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th. लेट्स मूव ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. Before moving on to the Planck's quantum theory, here are some observations which can't explain about EMW, that is electromagnetic waves dual nature. Dual nature means EMW has both wave and particle nature. What are these observations? First, the nature of emission of radiations from hot bodies. Hot bodies emit radiations up to which level? Ejection of electron from metal surface on exposing radiations. This is also observation which is not explained till now. Variations in the heat capacity of solid with the temperature. How solids on increasing temperature changes its heat capacity. It also not explained till now. Lastly, line spectra of hydrogen. So before moving on to the Bohr's model of the atom, we had to study about these four phenomena. So today we are here to study about the nature of emission of radiation from hot bodies by Planck's quantum theory. In 1900, Max Planck explained when solid is heated in a furnace, it emits radiations of different wavelength. 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी सॉलिड को किसी फर्नेस में हीट करते हैं तो उसमें डिफरेंट रेडिएशंस एमिट होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ कि वो रेडिएशन एमिट करेगा बट डिफरेंट वेवलेंथ की. उसने एक आयरन रोड लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया. जब उसने आयरन रोड को हीट करना स्टार्ट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट टेम्परेचर विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. नाउ मूव ऑन एंड सी व्हाट टाइप ऑफ कलर ही ऑब्जर्व. Firstly, when he heated the iron rod in the furnace, he observed a dull red color. Then he gave more temperature. When he rises the temperature, he observed bright red color. Thirdly, he observed the white color, and when he increased the temperature up to higher level, then he observed blue color. Dull red color has less frequency. Bright red is more frequency than dull. White color has more frequency than dull and bright red color, and blue color has the maximum frequency. It means as the temperature goes up, radiations moves from low frequency to high frequency. He called this phenomena black body radiation. Now we are here to study what is black body and what is black body radiation. So what is black body? Black body is the ideal body. Why it is called ideal body? Because a ideal body that emit and absorb all frequency. So it is an ideal body that emit and absorb all frequencies. Next is our black body radiation. What is black body radiations? The radiations emit by the black body. जो radiation black body emit करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? Black body radiation. The radiations emits by black body is called black body radiation. At last, Planck suggested that atom and the molecule emits or absorb the energy not continuously. अब ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया? यहाँ पर उन्होंने आयरन की रोड को ब्लैक बॉडी समझा हुआ है और ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकली उन्होंने उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोला. तो फाइनली उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ये ब्लैक बॉडी है ये हमारी एनर्जी तो प्रोड्यूस करती है, नॉट कंटिन्यूअसली बट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स. सो प्लैंक ने क्या ऑब्जर्व किया? प्लैंक ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्वेशन था प्लैंक का? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स emit and
and absorb energy in the form of packets or in discrete form. These discrete packets are called quanta or photons. Atoms and molecules emit and absorb energy in the form of the packets or in discrete form, and these discrete packets are known as quanta or photons. So this theory is known as Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. After that, Planck suggested that energy of a quantum. हमने बात की अभी कि जितना हम हीट कर रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे. तो क्वांटम ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया कि जितने भी क्वांटा और डिस्क्रीट पैकेट्स होंगे सभी की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे. सो ही लास्टली से ई, दैट इज एनर्जी ऑफ अ क्वांटम. एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं ना जिसे. एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द न्यू. न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी. अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो ये आता है एच न्यू. एच इज़ हेयर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द एच इज़ 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. So in this way Planck was able to explain the distribution of intensity. At last Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiations by his black body experiment. Black body radiation experiment with lambda and temperature. I hope you can understand what is black body and what is black body radiation and how Planck was able to clarify the distribution of intensity in radiation by this experiment with temperature changes. Whenever we heat any solid in a furnace, as well as we rises its temperature, it gives the different frequency. I hope you can understand by this video the Planck's quantum theory and why it is called the quantum theory. Thank you.